coordinator, IDPS Srinagar. Someone rightly said, when women participate fully and equally in the affairs of the world. Much has been said about women empowerment, entrepreneurship, and it has become a significant topic of discussion in development and economics. Women empowerment helps in boosting the status of women through literacy, education, training, and awareness creation. It refers to the ability of women to make strategic life choices, which had previously been denied to women. I'm the first international journalist of my state. I thought I should not leave this domain, though the concept of media today is really changed, you know. The purpose of media has changed over the time. Now is the yellow journalism popping up. I mean, media has played a vital role, you know. And I must say that Kashmir is really beautiful, but the message which has gone to the outside is still that it's not safe. It's my 9th day over here, and I must say, and I'm proud that Kashmir is not the way it has been projected, first of all. Assalamualaikum friends, hope you all are doing fine. I'm here because of what I believe. I believe when you work, you are not a man or a woman, you're a person. Having a job, being in a job, running a company, running a school, or even being a shopkeeper, being a nurse or doctor, or doing work from home and earning out of it, all kinds of jobs gives you a sense of empowerment. Either ourselves, our own will stops us, or society stops us. Like my career started with Vishwabharati Girls Higher Secondary College. I was studying there and got appointed there because I was a very, very bright student and very good sports person as well. Much has been spoken before me, and a woman doesn't need any introduction. But I expect men to hear us today rather than the women. So it's very important that all men over here should hear us out rather than the women, because they know their potential much more than anyone else. इसका मौजू है जो हमने ये रखा है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट. मेरे ख्याल में ये कहना तो गलत है कि औरत कभी पावर में नहीं रही. शायद औरत ही पावर में रही है. जब से ये कायनात दुनिया आई है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मुकाम दिया गया है फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड, जो दिया गया है अल्लाह की तरफ से, वो औरत को ही दिया गया है. औरत सबसे पहली टीचर है. जो आपकी जनरेशन है, जब बच्चा आता है तो सबसे पहली टीचर जो है वो औरत है. और आपको मालूम है कि इस्लाम में औरत को बहुत बड़ा मुकाम दिया गया है. मैं बाकी मज़हब की बात नहीं करूँगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सब बाकी मज़हब में भी होगा. लेकिन जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, सबसे अजीम रुतबा जो दिया गया है वो औरत को दिया गया है. हमारे पैगम्बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा उनको प्यार अपनी बेटी के साथ था. तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि एक बेटी की कितनी अहमियत होती है. वुमेन एम्पावरमेंट डिबेट्स मैंने कभी पढ़ा भी है, देखा भी है. इट एंड्स अप जेंडर फाइटिंग में. इनइक्वालिटी इक्वालिटी से स्टार्ट होके फिर कहता है मेल फीमेल, मैन वुमेन, इस पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है. तो शायद पता नहीं, दुनिया में एक राय चली है, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. If we go by history, we'll come to know that it has started some 200 years before from New York, 1848, 15 to 18th July. First women rights movement start हो गई थी, where 300 women have taken part into this. They have signed resolution that औरतों के हुकूक पूरी दुनिया में सलब किए गए हैं, and they have started this revolution. या सबसे ज़्यादा औरतों पर अगर किसी रीजन में जुल्म हुआ है वो यूरोपियन रीजन में हुआ है. You start from Vikings, you see how they are treating with women. ये जो इस वक्त डिस्कशंस हो रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी पे कोई नहीं बोल रहा है. एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, आपकी जिम्मेदारी क्या है? टू
educate a child how to think, to develop critical thinking. यही तो आपका काम है ना. New education policy, it's all about what to think and not how to think. It's all about what to think. It is not about how to think. So that is the basic fundamental difference on which there is a lot of conflict right now, but obviously government in power. Anyway, Hub of empowered women. I travel daily 110 kilometers to Durham. My residence in Nishat and my school is in Patan. Exactly. So जहाँ पे मैं 1 साल 2 साल नई नई लड़कियों को चांस देती हूँ, अपने साथ रखती हूँ, फिर मैं उनको बोलती हूँ नाउ यू आर फ्री, गो स्टार्ट योर वर्क. तो फिर उनको मैं गाइड कर. इट्स एक्चुअली अ हब ऑफ एम्पावर्ड वुमेन. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.